Good morning, students. Today we are going to discuss few more properties of inverse trigonometric function. Sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x if x is between minus 1 and 1 including endpoints, or mod x is less than equal to 1. Number 2. Or x belongs to closed interval minus 1 to 1. Number 2, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x if minus 1 less than x, minus 1 less than equal to x less than equal to 1. Third is tan inverse of minus x is minus tan inverse x if x is any real number. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. X is any real number. Fifth is sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x. Mod x is greater than equal to 1 means x is less than equal to minus 1 or x greater than equal to 1, that is if mod x is greater than equal to 1. And last is cosec inverse of minus x is minus cosec inverse x, again the same interval, x less than equal to minus 1 or greater than equal to 1, that is mod x is greater than equal to 1. Let us do first sine inverse of minus x is minus sine inverse x if x is from minus 1 to 1 or x belongs to closed interval minus 1 to 1. As x is between minus 1 and 1, this implies minus of minus 1 plus 1, multiply each part by minus, so minus x greater than minus 1 or minus 1 less than equal to x less than equal to 1. Why we are doing this part? Because sine inverse of minus x, this is minus x. Sine inverse of minus x will be defined if minus x is between minus 1 and 1. So it is so. So sine inverse minus x is defined. Let sine inverse minus x is theta. Let sine inverse minus x is theta. Where theta is from minus pi by 2 to pi by 2, because it is the principal value of sine inverse of minus x. So this will imply minus theta. Minus theta ये आ जाएगा same. Minus से multiply करो, it will be pi by 2 greater than equal to minus theta greater than equal to minus pi by 2. So we can write this way. So this implies minus x is sine theta, minus x is sine theta, or x is minus of sine theta, and minus of sine theta because minus, I will write it as minus of theta. Why not pi plus theta? Because जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो ये माइनस थीटा जो आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तभी आएगा जब मैं यहाँ माइनस थीटा लूंगा. तो आई विल राइट x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा. सो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स
of x is minus theta, that is minus sine inverse x is theta. So you can see this is theta, so replace theta here. So I can say theta means sine inverse of minus x is minus of sine inverse x. Now let us do part 2. Second is cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x minus 1 less than equal to x less than 1. Again, I will check the domain of cos inverse minus x. Minus 1 equal less than equal to x less than equal to 1 implies minus 1 is less than equal to minus x less than equal to 1. ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था. Therefore, cos inverse of minus x is defined. So let cos inverse of minus x is theta. Now let us discuss about theta. Theta is between 0 to pi. मुझे पता है मुझे पाई माइनस थीटा लाना है, तो लेट अस डिस्कस व्हाट विल बी क्वाड्रेंट ऑफ पाई माइनस थीटा. दिस इंप्लाइज माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन, ये क्लोज्ड इंटरवल है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, और माइनस पाई लेस देन equal to minus theta less than equal to 0. Adding pi to each part, 0 less than equal to pi minus theta less than equal to pi. So when theta is in 0 to pi, pi minus theta is also in 0 to pi. So I can write minus x is cos theta or x is cos pi minus theta. पाई प्लस थीटा लिखूंगा तो वो 0 टू पाई में नहीं आएगा, तो पाई माइनस थीटा एज पाई माइनस थीटा इज इन 0 टू पाई, तो आई कैन टेक इट्स इनवर्स. सो कॉस इनवर्स एक्स इज पाई माइनस थीटा बिकॉज पाई माइनस थीटा इज इन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स. तो पाई माइनस थीटा 0 टू पाई है, तो cos इनवर्स x के इक्वल हो सकता है. एंड व्हाट इज देयरफॉर cos इनवर्स x इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा इज cos इनवर्स माइनस x, और आई कैन रीराइट cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x. Now next is tan inverse minus x minus tan inverse x. X is any real number. So here as x is any real number, so minus x is also any real number. Therefore tan inverse minus x is defined. तो डोमेन भी चेक कर लेनी चाहिए. नाउ लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज थीटा. सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, एंड थीटा इज वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, सो इट हैज टू बी बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 टू pi by 2. This implies, तो माइनस थीटा भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मुझे माइनस थीटा लाना आंसर. सो दिस विल इम्प्लाई माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और ये आएगा पाई बाई 2 ग्रेटर देन माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2. तो उसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं.
So minus pi by 2 less than minus theta less than pi by 2. So this implies now minus x is tan theta, or x is minus tan theta. So I will write x as tan of minus theta is minus tan theta. tan पाई माइनस थीटा भी यही होगा, लेकिन पाई माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे tan इनवर्स जब लूंगा तो यहाँ माइनस थीटा बचेगा और माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, तो ये जस्टिफाइड है. सो tan इनवर्स x इज माइनस थीटा, और tan inverse of x is minus theta is tan inverse of minus x. This implies tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Fourth part, cot inverse of minus x pi minus cot inverse x. X is any real, as x is in R. This implies minus x is also a real. Therefore, cot inverse minus of x is defined. Now let cot inverse of minus x equal to theta. Theta is principal value of cot inverse function. So 0 less than theta less than pi, और 0 ग्रेटर देन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और माइनस पाई लेस देन माइनस थीटा लेस देन 0. Add pi to each part, 0, minus pi plus pi 0, pi minus theta, 0 plus pi is pi. Pi minus theta is 0 to pi. This implies minus x is cot theta. So x is minus cot theta. Now minus cot theta I will write cot pi minus theta, not minus cot theta, because pi minus theta is in principal value branch of cot inverse. So I can take cot inverse both side, because pi minus theta is principal value of cot inverse, 0 to pi में आता है. So this is cot inverse x is pi minus theta is cot inverse of minus x. So changing these two position, get cot inverse of minus x is pi minus cot inverse. Fifth part is sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x, mod x greater than equal to as mod x is greater than equal to 1. Therefore mod of minus x is also same, greater than equal to. Therefore sec inverse of minus x is defined. The domain में आ गया. Now let sec inverse of minus x is theta. Theta will be 0 less than equal to theta less than equal to pi, but theta is not equal to pi by 2. So this implies 0 less than equal to pi minus theta less than equal to pi.
but theta is not, pi minus theta is not equal to pi by 2, क्योंकि जब मैं थीटा को पाई बाय 2 डालूंगा तो पाई माइनस थीटा फिर पाई बाय 2 नहीं आएगा अगर थीटा पाई बाय 2. So this implies minus x is sec theta. This implies x is minus sec theta. Implies x is sec पाई माइनस थीटा. पाई प्लस थीटा नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आई, और पाई माइनस थीटा सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में. पाई माइनस थीटा सेक इनवर्स है, और पाई माइनस थीटा इज सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स एक्स. So we are getting sec inverse of minus x, तो चला जाएगा इधर पाई माइनस sec inverse. Now last part, cosec inverse x minus x is minus of cosec inverse x mod x is greater than equal to, as mod x is greater than equal to 1, therefore mod of minus x is also greater than equal to 1, therefore cosec inverse of minus x is defined. That cosec inverse of minus x is theta, तो ये माइनस पाई बाय 2 होगा, बट नॉट इक्वल टू 0. इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा. साइन इनवर्स में भी हमने ये डिस्कस, एंड माइनस थीटा not 0 because theta is not. So this will imply x is minus cosec theta. Cosec theta को minus cosec theta को I will write cosec of minus theta, not cosec of pi plus, because pi plus theta will be not in the principal value. So cosec inverse of x is minus theta. Cosec inverse of x is minus cosec inverse minus x, interchanging sides, cosec inverse of minus x minus of cosec inverse. So proof may not be asked in the examination, but it will enhance your concept. We'll be doing few more properties in the next video.